Hello students, this video is for class UKG. So let us start. We have three different sections in this sheet, okay? English, Maths and EVS. Three sections, English, Maths and EVS, okay? Let us start with Maths. Look at the pictures and write behind or front on the basis of where monkey is standing. Okay? So, basically what we have to do is we have to write behind and front. हमें behind और front write करना है on basis of where monkey is standing. किस basis पे? monkey के standing basis पे. ओके कि monkey कहाँ पे खड़ा है. अगर monkey आगे सामने object के सामने खड़ा है then we will write front. If the monkey is standing in front of the object, forward of the object, then we will write front. And if the monkey is standing at the back of the object, then we will write behind. Okay? Yeah. So, हमें क्या करना है, जब अगर monkey object के सामने है तो हम front write करेंगे. अगर monkey object के पीछे है तो हम behind write करेंगे. Okay? So what does it mean? What is the meaning of behind or front? Behind means पीछे. Okay, किसी चीज के पीछे. और front means किसी चीज के आगे, किसी इंसान के आगे. मतलब कोई भी noun है उसके आगे. Understood? Yeah. So let's start solving. You can see in the first picture the monkey is standing in front of the wall. Wall के सामने खड़ा है, आगे है wall के. So we will write front. 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 What we will write? We will write front. 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 Okay? In the second picture you can see the monkey is behind the box. Monkey कहाँ है? Box के पीछे है. Monkey is behind the box. Then we will write behind. 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 Monkey is behind the box. Understood? When the monkey is in front of the object, then we will write front. When the monkey is back on the object, then we will write behind. अगर monkey सामने खड़ा है object के तो हम front write करेंगे. अगर monkey object के पीछे खड़ा है तो हम behind write करेंगे. Understood? You can see that in the third picture the object is earth. Where is the monkey standing? Monkey is standing in front of the earth. Earth के सामने है, आगे है. So we will write front. 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 And in the fourth, the monkey is behind the duck. Duck के पीछे है. So what we will write? We will write behind. 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 Understood? Good. Like this, we will do all the rest questions. And you will learn the spelling of behind and front. आप spelling भी learn कर लेंगे behind और front की. What? Okay? Speak with me. 1. BEHIND. 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 FRONT. 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 Yeah. Now, see the second question, which is of English.
Match capital letter with small letter. Okay, what we have to do in this? We have to match capital letter with small letter. Capital letter को small letter से match करना है. Capital A to small a, capital B to small b, capital C to small c, capital D to small d. Understood? Yeah. So what we will do? We will match capital letters with small letter. Understood? हमें क्या करेंगे? कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर से मैच करेंगे. ओके या सो लेट अस रिवाइज A to Z alphabet with words and their spelling. Okay. A for apple. APPLE apple. B for ball. BALL ball. C for cat. CAT cat. D for dog. DOG dog. E for elephant. ELEPHANT elephant. F for fish. FISH fish. G for grapes. GRAPES grapes. H for horse. HORSE horse. I for ice cream. ICE ice. CREAM cream. Ice cream. J for joker. JOKER joker. K for kite. KITE kite. L for lion. LION lion. M for monkey. MONKEY monkey. N for nest. NEST nest. O for orange. ORANGE orange. P for peacock. PEACOCK peacock. Q for queen. QUEEN queen. R for rabbit. RABBIT rabbit. S for sheep. SHEEP sheep. T for tiger. TIGER tiger. U for umbrella. UMBRELLA umbrella. V for violin. VIOLIN violin. W for watch. WATCH watch.
X for xylophone. XYLOPHONE, xylophone. Y for yacht. YACHT, yacht. Z for zebra. ZEBRA, zebra. Okay, so what we have done, we have read alphabet A to Z with their words and their spellings. हमने अभी लेटर ए से लेके लेटर जेड मीन्स अल्फ़ाबेट ए टू जेड रीड किया विथ वर्ड. ओके, वर्ड के साथ. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट वी हैव टू डू इन इंग्लिश. हमें इंग्लिश में क्या करना है? वी हैव टू मैच कैपिटल लेटर्स विथ स्मॉल लेटर्स. हमें कैपिटल लेटर्स से स्मॉल लेटर्स को मैच करना है. नाउ सी द last section, A of EVS, Environmental Studies, EVS. Color the box in green for good manners and in red for bad manners. Okay, so what we have to do in this? We have to color the box green for good manners and red for bad. Okay, अगर यहाँ पे कुछ sentences written है. Okay, सो अगर सेंटेंस गुड मैनर है तो हम उसके सामने वाले बॉक्स को ग्रीन कलर करेंगे. अगर सेंटेंस गुड मैनर है तो हम बॉक्स को ग्रीन कलर करेंगे. बट इफ द सेंटेंस इज बैड मैनर, अगर सेंटेंस बैड मैनर है सो वी विल कलर इट विथ रेड. तब हम इसे रेड से कलर करेंगे. अंडरस्टूड? If the statement is a good manner, then we will color with green. And if it is a bad manner statement, then we will color it with red. Cleaning your toys. अपने टॉयज को साफ सुथरा करना, क्लीन करना. Is it a good manner? Is it a good manner? Yes, it is a good manner. So what we will do? We will color it with green. हम इसके बॉक्स को ग्रीन कलर से कलर करेंगे. Color the box with green. Be polite. Be polite means सबके साथ अच्छे से बिहेव करना. That is called polite. So, is it a good manner? Yes, of course, it is a good manner. What we will do? We will color the box with green. Color the box with green. Writing on walls. राइटिंग ऑन वॉल्स, दीवारों पर लिखना. दीवारों पर लिखना अच्छी बात है. इज इट अ गुड मैनर? नो, इट इज नॉट अ गुड मैनर. ये अच्छी गुड मैनर नहीं है. इट इज अ बैड मैनर. इट्स अ बैड मैनर. सो व्हाट वी विल डू? वी विल कलर द बॉक्स विथ रेड. बॉक्स को हम रेड कलर करेंगे. अंडरस्टूड? Yes, very good. So, like this we will do the rest questions. Okay, good manners के बॉक्स को ग्रीन कलर, बैड मैनर्स के बॉक्स को रेड कलर. Understood? Very good. So I hope you all have understood this sheet very well. If you still have any kind of doubt, you can ask me. Thank you.